Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. Dear students, I have posted many videos on similar sounding words, and I hope you must have watched them. If not, I'll give the link in the description box. Do watch them, they are very useful. If you are new to my channel, please subscribe the channel. And if you like the video, please don't forget to like it, comment, and share with your friends. So let's get started. Temper. Now see here, R is not pronounced. Temper, which means interfere with something or meddle. किसी भी चीज में interfere करना, दखलंदाजी करना या meddle. Meddle also means the same. Make unauthorized changes. Unauthorized means which you are not supposed to do. जो हमें ऑथोराइज ही नहीं है, हमें नहीं करने चाहिए जो चेंजेस किसी डॉक्यूमेंट में, पेपर में, लेकिन अगर हम उन्हें करते हैं तो उसको कहते हैं टेम्पर, कि पेपर्स के साथ टैम्पर किया गया है, मतलब छेड़छाड़ की गई है. नाउ लेट्स यूज दिस वर्ड इन सेंटेंसेस. First of all, we must know this is a verb. ये क्रिया है, छेड़छाड़ करने की क्रिया या अनऑथराइज्ड चेंजेस करने की क्रिया. Mr. X tried to tamper with the official document. Mr. X, XYZ, कोई भी person, he tried to tamper with the official document. उसने official document में some changes करने की कोशिश की. Another can be, she tried to tamper with a legal document to help her client. Now she tried to tamper. तो उसने legal document से में छेड़छाड़ करने की कोशिश की ताकि वो अपने client की help कर सके. This way you can use. When Rohan came to know that he had failed an exam, he planned to tamper with the lock of his teacher's house in order to make changes in his mark sheets. When Rohan came to know that he had failed in exam, जब उसे यही पता लगा कि वो एग्जाम में फेल हो गया, तो उसने टीचर के जो डोर का लॉक था उसको टेम्पर करने की कोशिश की, इसके साथ छेड़छाड़ में इसको तोड़ने की कोशिश की, उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की ताकि वो खुल जाए और अपनी मार्कशीट में चेंजेस कर सके. दिस इज वेरी बैड, बट उसने ऐसे करने की कोशिश की. सो दिस वे ऑल्सो वी कैन यूज टेम्पर. टेम्पर. टेम्पर इज अ नाउन which means condition of mind and emotions. In Hindi we call it मनोवृत्ति. इसे हम मनोवृत्ति कहते हैं. अब मनोवृत्ति क्या होती है? Sometime we are in a very happy mood. कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी, कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी हम बहुत उतावले होते हैं, कभी हमारा मूड बहुत खराब होता है, कभी बहुत अच्छा. ये सारी चीजें टेम्पर कहलाती हैं. ठीक है, तो अब हम इसको यूज करते हैं सेंटेंसेस में. डोंट आस्क फॉर अ लीव टुडे सिंस द बॉस इज इन अ बैड टेम्पर. भैया आज बॉस से छुट्टी की बात तो मत करना, क्योंकि आज बॉस का मूड जो है बहुत ही खराब है. इज इन अ बैड टेम्पर. ओके. अनदर कैन बी, व्हेन पीपल आर डिस्टर्ब्ड दे फेल टू कीप देयर टेम्पर अंडर कंट्रोल. Isn't it? When people are disturbed, they fail to keep their temper under control. तो अपना टेम्पर जो है वो कंट्रोल में नहीं रख पाते जब वो डिस्टर्ब होते हैं. Next is, having seen the teacher in good temper, the student asked to have fun in the class. बच्चों ने देख लिया आज टीचर का मूड बहुत अच्छा है, चलो आज हम, तो उन्होंने क्या कहा टीचर से कि आज मैम आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज वी विल हैव फन, आज मस्ती करेंगे, है ना. करते हैं ना कभी कभी,
या आज हम अंताक्षरी खेलेंगे या कोई और गेम खेलेंगे या आज हम कुछ नहीं करेंगे. Okay, so that is there also you can use temper. So these are different sentences and you have learned how to use temper. Now basic differences. Tamper means छेड़छाड़ करना, to meddle with something, or temper means condition of the mind. So this is the basic difference. I hope you have understood, and please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thanks for watching and see you in the next video.